Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Osama Shah. There is rumbling in the India bloc, and days after her MP suggested the same, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, she has said that she is ready to take up the leadership of the India bloc. Mamata Banerjee's interview to a news channel has led to fresh talk about her offering leadership of the India bloc after the Congress's dismal performance in the recently held assembly elections. Now, Samajwadi Party has voiced support for Mamata Banerjee, while India partners, Congress and the CPIM have expressed caution. Mamata Didi is an absolute integral part of the India alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. पुराने नेता हैं, लंबा अनुभव है, संघर्ष के रास्ते से उन्होंने राजनीति में स्थान बनाया है और सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है। वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है और ये बाकी इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर तय करना है क्या होना है। लेकिन वो हमारी नेता हमारे साथ आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ तो हैं ही। इंडिया गठबंधन को भी अगर फॉर्मली ज्वाइन करती हैं या लीड करने की कोई फैसला, कोई बातचीत सारे इंडिया गठबंधन के घटक लोगों के में होती है तो हमारा तो सहयोग ही रहेगा। हमको ममता जी से क्या समस्या हो सकती है। उनकी अपनी राय है, उनकी एक मंशा है। इंडिया ब्लॉक के एक सदस्य के रूप में है ममता जी, और जो भी बातें होंगी स्वाभाविक है कि सब साथ में बैठ के उस पर फैसला लेंगे। इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। There's a clear sort of example that many are giving, especially after the assembly elections, for example, in Maharashtra and Jharkhand. For example, say in Maharashtra, where the Congress played, the frontal role or the primary role in taking on the BJP with allies, the results were clear that the BJP clearly won. But in Jharkhand, for example, where a regional force like the JMM took on the BJP, the Congress also was part of the alliance, but the BJP was stopped. And this is where, parties like the Trinamool point out that, look, regional forces and especially parties like the Trinamool have been far more successful in taking on the BJP. And therefore, the Congress, when it comes to providing leadership, has not performed as well. Now, Mamata Banerjee's comments to a leading Bengali news channel has, of course, been something that has also led to reactions, as we heard, from right across the Indian bloc and from those opposing the India bloc as well. And this is very clear because Mamata Banerjee is someone who's seen as a person, a leader with strong political pulse, also someone who's a very grassroots politician, but also someone who, in a way, in a sense, pushed this idea of the India alliance, I beg your pardon, for everyone to come together before the Lok Sabha elections. However, there were complaints about the way the India alliance was managed, especially the leadership, and the Trinamool decided it was going to have nothing to do with the India alliance, fighting the BJP on its own in Bengal during the Lok Sabha elections, and managed to improve its tally and bring down the BJP's tally. Then, of course, we had these assembly elections, and even during these assembly elections, there were bypolls in West Bengal. Again, the Trinamool emerged as number one in all these seats, won all 6 seats. So, there is clearly something that Mamata Banerjee's leadership has, given the India alliance to talk about. And this is something that's being discussed in the wake of her own comments that she says that, she can lead the India alliance even from Bengal. She doesn't need to venture out. And trouble is brewing between the two Mahavikas Aghadi former partners, Shiv Sena and Uddhav Balasaheb Thackeray, and Samajwadi Party. Samajwadi Party has in fact exited Mahavikas Aghadi over Sena UBT post on the Babri Masjid demolition. This after a close aide of Uddhav Thackeray hailed the demolition of the Babri Masjid. Samajwadi Party's Maharashtra chief Abu Azmi, he has said that
The Samajwadi Party has exited Mahavikas Aghadi with its 2 MLAs. Remember, Samajwadi Party was upset over that post on the Babri Masjid demolition. Uddhav Thackeray's aide had hailed the demolition of Babri Masjid. Samajwadi Party, in the meanwhile, had slammed Sena UBT's extreme stand on this entire issue. कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप नाराज हो? देखिए, ऐसा है कि मुद्दे बहुत सारे थे, नाराजगी भी थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हमने कोई अलगाव नहीं किया, इन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं किया, मीटिंग में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में बुलाए नहीं, एक दूसरे के मंच बने गए। चलिए वो सब ठीक है, उसको हमने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं, वो हमारी शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत ये है कि इस इलेक्शन के बाद से उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मेरा मुद्दा हिंदुत्व का है और हिंदुत्व पे सब वर्कर काम करना शुरू कर दो। तो ये सांप्रदायिकता है। इन्होंने पहले माफ़ी मांगा था कि मैं अभी सेकुलर पार्टियों के साथ में हूँ। फिर उन्होंने 6 दिसंबर, जिसे हम ब्लैक डे कहते हैं, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया और कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, लेकिन किसी पे कोई सज़ा भी नहीं हुई, हमने सब बर्दाश्त किया। अब ये कह रहे हैं कि अब बधाई दे रहे हैं कि भाई जिन्होंने डिमोलिश किया उनको बधाई हो। यही मुद्दा है। मिलिंद नार्वेकर जो उनके एमएलसी है, उन्होंने सीधा पोस्ट की और उन्होंने ऐसा पोस्ट में लिखा है मराठी में कि अभिमान है उन लोगों का। हाँ, तो हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते ना। जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी को अभिमान कहेंगे, तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। तो आपकी भूमिका क्या हो सकती है? आप अकेला चलोगे महाराष्ट्र में? अकेला रहेंगे हम तो। देखिए, महायुति के साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो उनके साथ जा ही नहीं सकते। हम अकेला अपना काम करेंगे और क्या। दो ही तो हम लोग हैं। हमारे हटने से वहाँ महाविकास अघाड़ी की कोई सरकार गिरती नहीं, बनती नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। Another shocking case of lawlessness in the national capital has been reported. A 52-year-old man, a businessman, he was shot dead in Delhi's Shahadra area while he was going for a morning walk. This incident, it has now highlighted the worsening law and order situation in the city, with politicians trading blame over the rising crime. Here's a report. A shocking murder in the capital in broad daylight on the open street. Sunil Jain, a 52-year-old utensils businessman from East Delhi, was shot dead on his way home on a two-wheeler after his morning walk around 7 a.m. 2 so far unidentified men on a bike shot him from close range in East Delhi's Vishwasnagar area in Shahadra. He was taken to hospital, but it was too late. सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी है उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे क्योंकि इस वक्त ये हादसा हुआ। An incident is quite spine-chilling considering it is happening in a prime location in Shahadra, Vishwas Nagar. 7 to 8 times the two assailants fired openly to unidentified assailants. Although investigation is underway, these two people have not been identified yet. But he was, but of course he was literally, the victim was literally on his way back home in Krishna Nagar from the Yamuna Sports Complex, and on his way he was murdered by these two men who were coming on a motorcycle. And remember that this crime spot is literally 900 meters away from a nearby police station. It definitely raises severe questions of law and order situation in Shahadra area. हम सवेरे यमुना कॉम्प्लेक्स वॉक करने जाते हैं, रोज जाते हैं, हर रोज जैसे जाते हैं निकल के। जैन साहब भी हमारे साथ थे, एक भैया और सुमित भैया, उनकी स्कूटी पर जैन साहब बैठे हुए थे। मेरी स्कूटी थोड़ा सा बगल में ही थी उनके आगे, तो वहाँ पे रेड लाइट हुई है, हमारी स्कूटी रुकी है, पीछे से 2 बाइक पे लोग आए, उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल गिरा है। तो जैन साहब ने चेक करा, हमने सबने चेक करा, तो मैंने कहा नहीं। जैन साहब से कुछ पूछा उन्होंने नाम, बस इतनी देर में एक बंदा बाइक से उतरा, सीधे गोली मार दी उनकी। बता दें कि जैन साहब ने भी बोला था अगर कुछ भी चाहिए मेरे से तो ले लो, मुझे मारो मत, जो सामान चाहिए ले लो, मारो मत। और उन्होंने कोई बात नहीं करी और सीधी गोली मारनी चालू कर दी। जैसे हम छोटी उम्र है हमारी उनसे, तो हमारे को बेटे की तरह, अरे तू मेरा बेटा है, अरे मेरा भाई है तू, मतलब ऐसा नहीं चलता। While the police probe if there was any personal or professional enmity behind this murder, the rising crime in the capital ahead of the Delhi polls have led to a political blame game. गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो बीजेपी और अमित शाह, अब उनको एक ही जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, उसमें भी वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं। आज उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। आप जैसे अभी कह रहे हो, गिरिराज जी ने प्रश्न उठाया,
तो वो प्रश्न, वो भी जानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि बीजेपी की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। वो नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे। केजरीवाल बोलता है हमें मुख्यमंत्री बनाकर दिखाइए, ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री थोड़ी होगा कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को कंट्रोल ना कर पाए। तो अब केजरीवाल साहब उस टाइम ये बोलते थे, आज कह रहे हैं मेरे पास पुलिस नहीं है, अमित शाह जी लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। अमित शाह जी पूरे देश को चला रहे हैं। दिल्ली की जनता ने दिल्ली को मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाया, जिन्होंने अब खड़ा हुआ मुख्यमंत्री आतिशी जी को बनाया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनके मंत्री क्या वो वीआईपी हो गए, बड़े हो गए? The Shahadra incident is just one of the 3 murders reported in the national capital in 9 hours. In Govindpuri, a man was stabbed during a midnight brawl, while in Khayala, a 22-year-old strangled his mother to death in the morning. These incidents raise questions about public safety in Delhi. With camera person Mithilesh and Shreya Ghosh, Rika Roy for NDTV. Another ISKCON temple in Bangladesh has been vandalized and set on fire, this time in Dhaka. This incident is the latest in the series of attacks on ISKCON temples in Bangladesh, with the community alleging persistent assaults and limited government action. তো এটা আজকে গত রাতে আপনার রাত 8টার দিকে এখানে কিছু দুর্বৃত্ত পিছন দিয়ে আপনার ওই যে টিনগুলো ওইখান থেকে স্ক্রু খুলে ওই দিক দিয়ে আপনার কি বলে ওই যে পেট্রোল দিয়ে অকটেন দিয়ে আগুন দিয়ে করে যেগুলো পুড়ে ফেলছে। এখানে যে আমাদের বিগ্রহ, এটা হলো লক্ষ্মী, আমাদের লক্ষ্মী দেবী, তারপর নারায়ণ, লক্ষ্মী দেবীর শাড়ি পরা ছিল, নারায়ণের ধুতি পরা ছিল, এগুলো সব পুড়ে ফেলছে। আর এই যে এখানে আপনার এই ছিল যে পর্দা ছিল টানানো পুরোটা, এগুলো সব একদম পুরো ছাই করে ফেলছে। তো ওদের আরো বড় কোনো প্ল্যান ছিল। এদের মাঝখানে এসে আবার আমার ভাইসটা একটু বের হয়েছে রাত 8টার সময় ঘর থেকে, পয়সা দুয়ারে দাঁড়াইছে, দেখে যে এখানে আগুন জ্বলতেছে। তো সাথে সাথে এসে এগুলা জল টল দিয়ে আমরা ই করছি। তারপর আমাদের সবাইকে ডাকছে, ডাকার পরে তারপরে আমরা পিছনে গেলাম। তো আমরা যখন আমরা পিছনে গেছি তখন ওই এখানেই ছিল, মানে আমাদের সাউন্ড পাইয়া ওই দিকটা বের হয়ে চলে গেছে দুর্বৃত্তরা, মানে যারা আসছিল এটা বের হয়ে চলে গেছে। তারপরে আমরা আমাদের যে এরিয়ার সেনাবাহিনীর কর্নেল লেফটেন্যান্ট ওনাকে ফোন দিলাম, থানাতে ফোন দিলাম, এরা আইসা বিভিন্নভাবে একটি করে থানার পুলিশ এসবি এনএসআই এরা আইসা এগুলো তদন্ত করতেছে। আমরা থানায় অলরেডি একটা মামলা করেছি। তো দেখি আমরা এখন প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি থাকবে যাতে এটা সুষ্ঠু তদন্ত হয়, আমরা সুষ্ঠু বিচার পাই। Well, then, this is something that perhaps is, again, a shocking development, because this is once again an attack on an ISKCON establishment. And ISKCON has been the target of the Bangladesh government, with, the government labeling it in court a fundamentalist organization. Largely, ISKCON is, of course, a philanthropic organization. It does a lot of social service. It's the International Society for Krishna Consciousness. It also is a religious body, and this is something that, of course, is very, very clear as far as the ISKCON is concerned. However, there are radical elements in Bangladesh that are targeting the minority community and organizations that have sway within the minority community. For example, the ISKCON, which has a sway over the Hindu community. Now, this is something that obviously is playing out. There have been consistent attacks on minorities. Another example of how minorities perhaps are being, handled, or how they are being treated is, one of the professors of the premier university in Chittagong, Anupam Sen, the vice chancellor, had to resign from his post. And this is something, again, that is, he's a well-known educationist. He's, of course, mentioned his own reasons for resignation, but we are given to understand that he was under a lot of pressure. Now, this is the kind of, pattern that is playing out in Bangladesh, and there was, of course, a comment from the Chief Justice also, and this is something that perhaps is a worrying development, given that there's, like, Radharaman Das was saying that there may have been a lull, but the atrocities or the attacks on minorities are picking up in Bangladesh once again. Time now for a very short break. More news and updates on the other side.
Welcome back. The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, has responded to claims of BRICS undermining US dollar amid Trump's 100% tariff threat. Jaishankar says that BRICS nations have no plans to weaken the US dollar. Remember, US President-elect Donald Trump had threatened 100% tariffs on countries attempting to challenge the dollar's dominance. BRICS do discuss financial transactions, but certainly where India, BRICS doesn't, each country doesn't have an identical position on this. But where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. And Syrian rebels have made significant gains, reaching the suburbs of Damascus, according to opposition activists and a rebel commander. This rapid advancement is part of a larger offensive that has seen insurgents take control of major cities across Syria. This development marks the first time opposition forces have reached the outskirts of the Syrian capital since 2018. The Syrian army has withdrawn from much of southern Syria, leaving areas under opposition control. Reinforcements are being sent to defend the key city of Homs, which could be a crucial battleground in this ongoing conflict.